give you a brief biodata of Professor Gulshan Kumar Bansal. So he is a professor and head of Department of Pharmaceutical Studies and Drug Research at Punjab University, Patiala. He is also a coordinator of Centralized Admission Cell, Punjab University. He is a president of APTI. So till now, he has experience of more teaching experience of more than 23 years and research experience of more than 25 years. He has awarded 10 students. He has guided total of 10 PhD students. 4 are registered now, and total of 48 M Pharma students have completed their M Pharma under his guidance, and 2 of them are pursuing right now. He has total of 3 patents with his name. He has published 4 book chapters and 1 book, and a total publications of 90 with a total citation score of 2,489. He had carried out projects under CSIR, UGC, and AICTE. He has a life membership of APTI, IPGA, and Punjab Academy of Science, CEGR. So with this impressive profile, I request Professor Gulshan Kumar to deliver his lectures. So I request all the participants to participate interactively so that we can make this a success. So with this, Professor, I request you to take the stage. Sir, your mic is on mute. Oh, sorry. Thank you. Thank you so much. I'm just trying to share the screen. Let me see. Is the screen shared or not? I'm not seeing. Yes, sir. We can see the screen, sir. Okay. So can you see the presentation now? Yes, sir. It's visible. Okay. Thank you. So, dear participants, today we will be discussing about some aspect of Indian knowledge system. There are the different knowledge systems in India, and I will be particularly sharing my learning in Ayurveda, being associated with the field of medicines, um, so I can justify the role of Indian knowledge system or the prevalence of Indian knowledge system, but which is Ayurveda in Indian context, and its relevance and its applications in the modern times. So Indian knowledge system, if we see as a whole, so it is one of the oldest knowledge system in world, which has been tested through generations, and the basic uh, the focus of Indian knowledge system is well-being of all. When we say well-being of all, it is not just the physical well-being. It is the mental well-being, and it is the well-being of the society as a whole. So this knowledge system, it is based upon the deep understanding of humans, human beings, not just human beings, but also the all living systems, be it animals, be it aquatic system, be it the natural system, which you call it, which include plants. So all these parts of components of the universe, human beings, animals, aquatic system, and forests, so they all exist, in harmony. And when they live in harmony, they exist in harmony, only then we can ensure the well-being of all, because well-being of all means not just humans, but the well-being of nature, well-being of our other living system also. Now, when we talk about knowledge, so knowledge is of basically 2 types. One knowledge which is transferred from one generation to other generation orally. If I know something, I pass it on to my
my children, right? Then my children, they pass on to their children, right? So this knowledge system, you see, it travels from generation to generations, and it is not recorded anywhere. So if see, we all are none of us is immortal. So when this chain breaks, right, so some part of that knowledge diminishes or it just vanishes, right? So that is, you see, a very this is not a good for the society as a whole, because some knowledge which was inherited by us, that just goes away. The second type of knowledge is a composed knowledge. If I'm you see taught something by my early generation, so I just record it in the form of notes, in the form of literature, in the form of, you see, publications, in the form of books, or so on. And so that composed, that written knowledge, that becomes literature. So it is the literature basically which is the most important part of the traditional knowledge. See, based upon this literature, India has been able to defend certain unethical, uh, to prevent unethical practices. Like you might have heard about the turmeric patent, which some American company they tried to get American patent on the turmeric. Just imagine if that patent could have been granted to those scientists in those countries, we could not have used turmeric as a medicine, as antibacterial. And this turmeric is used, it has been in use as antibacterial, as anti-inflammatory agent since ancient times, right? Because of the available literature on the turmeric, right, the Indian government, Indian scientists, they could defend it, and that patent was cancelled. Similarly, the patent on neem was also cancelled based upon that existing literature. So that is the, you see, power, that is the importance of the composed literature. The Indian knowledge is basically classified into four types by the one of the earliest, one of the most late uh, Vedya, we call it Arth Shastra, which is written by Chanakya, right? So that is science. That one kind of knowledge is science of inquiry. We call it Anvikshki. So this is this is in use in general sense of science, logic, and philosophy. The second kind of knowledge is the three, which refers to the three Vedas, Samved, Rigved, and Yajurved. And the third type of knowledge is classified is named as Varta. So Varta represents, you see, the activities related to wealth creation, like that is agriculture, commerce. So earlier there were agriculture was used as a mean of living to livelihood. So they used to produce some grains, and those grains were you see exchanged in return of you see some other things which are required for the livelihood. Subsequently, it has you see emerged as a business and led to economics. And the fourth type of knowledge is the Danganiti, that we call as administration. So these are the four types of knowledges. And for the creation of knowledge, for the creation of, you see, composed knowledge or the systematic knowledge, there are three steps. One step, so these three steps which are mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, you see, we follow it. Like the first step is the darshan, means to see, to view something. So for the creation of, you see composed knowledge or the systematic knowledge, there are three steps. Interpret, we comprehend it.
So these three steps, using which our are existing mentioned knowledge. in our Like ancient system of knowledge, if we focus these on are a still, child, right? you see, we Who follow is, it. let's say, just Like the first step is the 1 year dasher, means to old. see, So to view everything something. around So him if or we her is new, see composed something, knowledge of he see arithmetic knowledge. There are he three see steps, right? kite, he We see one step comprehend it. cow, he So see this dog, these three cat, steps, right? using We our see existing knowledge. mentioned in our Like ancient system of knowledge, if we focus these on are a still, child, everything you is see, we new, follow it. and let's he is say, just Like the curious to first step know is the about dasher, it. means to And see, because to view everything something. around So him if or we her is new, see composed something, knowledge he of ask, arithmetic knowledge. There are he three see steps, kite, right? he We see comprehend what it. cow, he So see these dog, three cat, steps, right? using Using our our existing knowledge, mentioned in our like ancient system of and knowledge, if we focus these on are a still, child, everything is we new, follow it. and he is Like the curious to first know step is the about dasher, it. means to And see, because to view everything something. around So him if or we her is so the new, first point, composed right, knowledge he of asks, arithmetic knowledge. There are he three steps. interpret, Means he we ask what comprehend cow, it. what So these three three steps, see, using to our view mentioned in our like ancient system of and knowledge, if we focus these on are a still, child, everything is we new, follow it. and he is Like the curious to first know step is the about dasher, it. means And to see, because to view everything something. around So him if or we her is so the new, first point, composed right, knowledge of first thing arithmetic knowledge. There are he three steps, interpret right? We one step comprehend cow, it. what So these three three see, using to our view mentioned in our like ancient system of and knowledge. if we These are focus still, everything is he new, follows it. and he is Like the curious to first step is know the about dasher, it. means to And see, because to view everything something. around So him if or we her is so the new, first point, composed right, knowledge of first thing arithmetic knowledge. he There are three steps, interpret right? We one step comprehend cow, it. So these right, see using using our our mentioned in our ancient like system of and knowledge. if we These are still, everything is he new, follows it. and he is Like the curious to first step is know the about dasher, it. means to And see, because to view everything something. around So him if or we her is so the new, first point, composed right, knowledge of first thing arithmetic knowledge. There are three steps, right? We one step comprehend cow, it. So right, using our mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, everything is new, and like he the is first step curious is to the know. dasher, means to And see, because to view everything something. around So him if or we her is so the new, first point, composed right, knowledge of first thing arithmetic knowledge. There are three steps, right? We comprehend it. So right, using our mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, everything is new, and like he the is first step curious is to the know. dasher, And because everything around so him or her is new, composed knowledge of arithmetic knowledge. There are three steps, right? We comprehend it. So using our mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, everything is new, and like he the is first step curious is to the know. dasher, means to And see, because to view everything something. around So him if or we her is new, composed knowledge of arithmetic knowledge. There are three steps, right? We comprehend it. So using our mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, everything is new, and he is curious to know. And because everything around him or her is new, composed knowledge of arithmetic knowledge. There are three steps, right? We comprehend it. So using our mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, everything is new, and he is curious to know. And because everything around him or her is new, composed knowledge of arithmetic knowledge. There are three steps, right? We comprehend it. So using our mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, everything is new, and he is curious to know. And because everything around him or her is new, composed knowledge of arithmetic knowledge. There are three steps, right? We comprehend it. So using our mentioned in our ancient system of knowledge, these are still, everything is new, and he is curious to know. And because everything around him or her is new, composed knowledge of arithmetic knowledge. There are three steps, right? We comprehend it. So using our mentioned in our ancient system of knowledge,
Atharved. Then we have the four subsidiary Vedas. We have Ayurved, which is related to medicine, Dhanurved, which is related to weaponry, Gandharved, which is related to music, and the Shalpaved, which is related to architecture. Then we have another Vidya, we call it Puran. Right, we have these Puranas are nothing but they are the sacred writings on Hindu mythology or folklore. For example, we have the Grud Puran, we have the Shiv Puran, we have the Brahmand Puran, we have the Vishnu Puran or Markandeya Puran, right, or so on. So these all are another kind of Vidyas. Then we have another kind of Vidya, we call it a Nyay. So this Nyay, this is basically the traditional school of Hindu philosophy related to justice, rules, and method or judgment. Means that is the administration. So this Nyay is the most significant contribution to Indian philosophy. So this includes the development of a theory of logic and theory of you see administration. Then Mimamsa, this is a primary objective is to defend and justify Vedic rituals. Now there are some rituals in our culture, and then all those rituals they are based upon certain scientific principles, and but somehow those scientific principles or scientific basis they are not being they are not taught, they are not traveled. We just follow them as a ritual, right? लाइक जैसे चरण स्पर्श एक रिचुअल है, राइट? अगर पूजन के वक्त अगर वाइफ को राइट साइड बैठना है या लेफ्ट साइड बैठना है, वो एक रिचुअल है. बट देयर आर सम बेसिक्स अबाउट इट विच आर मेंशन्ड इन अवर which are long time mentioned in our Indian knowledge system, and somehow they are not traversed from generation to generation. So they are just so what we say that what the Vedas say, what the Indian knowledge system says that those rituals have not to be questioned; they are just to be followed, right? Then we have another Vidya. We call it a Dharma Shastra. That is a law of text of law and conduct. That is referred to the treatise on dharma, right? So that comes the you see law and legislation. Then we have the six auxiliary sciences, and these auxiliary sciences include you see siksha, that is in modern times we call it instructions or teachings, so like phonetics and pronunciation. Then we have the chants. Now chants, they are basically a form of this is a poetry basically, right? So if you want to say something in fixed number of words, right, we call it a chants, right? Then we have the vyakaran, grammar, that is another kind of vidya. Then we have the nirukt, we call it etymology. Etymology means the roots of a word. For example, if we say that how the term orange originated in English, right? So if you see the orange, how it is originated, if you go to the root of the word, it may be linked to see the Latin times, right, or some other language. But every word has an origin, right? So the origin of to learn about the origin of the words is called as nirukta or etymology in the modern times. Then we have the kalpa. Kalpa means proper or fit. That is the ritual instructions. So this kind of education or the science or the learning, it is focused upon the standardizing procedures for Vedic rituals associated with major life events such as births, wedding, and death in a family. So then the last one is the Jyotish. Now astrology is another kind of Indian learning or Indian system of education. So out of these different types of educations or different types of learnings, we are focusing on Ayurveda today. So this Ayurveda is derived from the two words Ayu. Ayu means life, right? Ayu, जैसे हम कहते हैं आयुष्मान भव. Ayushman Bhava means आपकी लंबी उम्र हो, right? So Ayu is related to our age, right? Age means life, and Veda means knowledge. So the knowledge of long life, that is a Ayurveda. So how we can live long life, right? That is Ayurveda. So knowledge system of healthy and happy life is Ayurveda. So it deals with the illness, wellness, and happiness. So
To live a healthy life, to live a happy life, we have to understand what is illness, we have to understand what is wellness. And when we know these two things, only then we can live happily, because we can avoid illness and we can promote wellness to live a healthy life. So this Ayurveda is deep rooted in our community, in Indian system. In fact, our medicine system is basically, even the modern system of medicine is based upon Ayurveda. So it is a deeply rooted in community, and therefore it is a deeply rooted in the public health. And this Ayurveda has a lot potential to meet health and wellness for all. See, whenever we experience any illness, uh, first we go to the allopathic doctor, physician, right? And let's say it's some chronic disease, and if it is not cured, if it is not treated well, then definitely we shift towards, or we focus towards the traditional system of medicine, that is Ayurveda, and also sometimes to homeopathy also, right? So it is a very, we consider it as very reliable. And in some cases, we our first point, first preference is Ayurveda, not the allopathic medicines. So this Ayurvedic system is, if we talk about how old it is as old as the life is existing. So it exists right from the beginning of life. So the Vedas, if we see the earliest Vedas, they are 500 years old BC, right? So based upon the Vedas, we can say that it is Ayurveda is a 500-year old, right? And but a systematized knowledge, as we have said in the beginning, first we see, then we experience, and then we report. So when we report, that becomes a systematized knowledge. So the systematized knowledge of Ayurveda started around 1000 years BC, right? But we cannot say that it is just 1000 years old, because it is as old as the life is there. Because when the life was there, there will be the problems of illness, there will be the problem with the wellness, and we have to find out the solutions. So the solutions were already in existence well before 1000 BC. Now, Ayurveda uh, is not just about herbal medicines or folk medicines or belief system or alternate medicine. Means, let's say if we talk about just say herbal products, we say Ayurveda is herbal products. No, it's not just herbal products. If we say Ayurveda is just a belief system, means you do this, you get up early in the morning, you get you go to bed late, early in the night, right? Or let's say you eat in the maximally eat in the afternoon. So this is a belief system, right? Or the alternate medicine, we have the Ayurvedic system of medicine, we have the Unani system of medicine, we have the Siddha system of medicine, right? We have the homeopathic system of medicine. So these are the individual systems, right? So it is not, each individual is not just completely Ayurveda, it is a collective collection of all. So Ayurveda is basically not just one kind of a medical system, a medicine system, it is a way of living. When we say way of living, means right from our diet, our daily routine, right? Our you see sleep cycle, to our eating cycle, to our you see our mental health, and ultimately to our treatment of the drugs. Now, Ayurveda, if we talk about, it's not about dealing with the humans. So, Ayurveda is basically related to humans, but we have the treatment for animals. We have the natural treatment or the Indian traditional treatment of animals. So, if we are talking about the animals, then it is a Gauriya Veda. And when we talk about the you see traditional treatment for plants, it's called as a Vriksha Ayurveda. Now, this Gauriya Ayurveda and Vriksha Ayurveda, these are not the very popular terms, but Ayurveda as a whole is popular because we are more concerned about the treatment. We are more, you see, not concerned actually, we are more exposed, right? We are more, you see, conversant with the treatment of illness in humans using Indian traditional system of medicine. Now, what is the aim of Ayurveda? The aim of Ayurveda is to promote health
and prevent diseases. And how we can do it? The Ayurveda aims to achieve this objective by adopting preventive life cycle right from the childhood. Right from the childhood, like हम बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको सुबह ये गर्म पानी पीना है ना, आपको आंखों पे पानी, ठंडे पानी के छींटे मारने हैं, राइट। आपको रात को जल्दी सोना है ना, आपको रात को कम खाना खाना है ना, आपको मेडिटेशन करना है, राइट। आपको नेचर के साथ खेलना है, राइट। आपको आउटडोर गेम्स खेलना है, राइट। सो दीज ऑल आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ आयुर्वेदा. So this include daily regime, these include seasonal regime. Seasonal regime means कौन से सीजन में क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कितने, कैसे आपको अपना सोने का साइकिल, कैसे आपको खाने का साइकिल चेंज करना है, कैसे आपको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी है, right? So these all are, you see, part of the Ayurvedic system of medicine, Ayurvedic system of knowledge. Then, even though if we are following it, sometimes we fall ill, right? So if we fall ill, how we can cure those illness, we can cure those ailments, right? That is a second objective of the second aim of Ayurveda. So that we can that Ayurveda claims that it can be treated, it can be cured by taking the appropriate medicines. When we talk about the Ayurvedic medicines, it means we are talking about the natural medicines which are derived from plants, herbs, right? And we can also cure certain ailments by modifying our diet and our other activities, like physical activities, or our psychological activities. So this aim of Ayurveda is the maintenance of health and the management of diseases. And so this Ayurveda provides you the personalized holistic approach. When we say personalized holistic approach, it means every human being or is a subject in its own, right? We all are different, right? If I'm suffering from, let's say, gastric disturbance, right? I'm suffering from acidity, right? And someone X is also gets suffering from acidity. So we two are having the same illness, but the reason may be different. Most probably it is a most generally it is a different. So we two are different. So for the treatment for two as of us will be also different. So it provides the personalized approach, right? So that is the beauty of Ayurveda. So it is holistic, not just physical. Like in allopathic system of medicine, say if we are having acidity, you take Eno, you take antacid tablets, you take some gel, right? It will be cured. It is not cured, it is a treated, right? So if you want to get it cured, right, we have to get it a personalized approach. We have to eliminate the basic reason, basic cause for that acidity or for that particular other ailments. So this Ayurveda is quite a complex system, and we have a lot of literature available on this, and it is based upon several sources. And those sources include Chark Samhita, Sushar Samhita, Ashtangata Sangraya, right? We have the Kashyap Samhita, or so on other literature. All are not included here. So, but we have the different literatures available on Ayurveda. And these are the strengths of Ayurveda. So, as it is focused on the prevention, treatment, and restoration of health, right? Then this Ayurveda is a time tested, as we said that it is as old as the life is. So, it is a time tested. It is a cost effective. Its quality, safety, and efficacy is assured because it has been in practice since thousands of years. Then it focuses on, you see, boosting our immunity. So if we have immunity is strong, then we will not get we will not be sick easily, right? Then rejuvenation, right? Then palliation. Then we have the holistic integrated approach. It is dealing with the various choices of treatments, right? It also includes the yoga, that is a physical activity, as well as the spiritual activity. Then we have the panch karma, which is a biopurification, right?
So these are the basic strengths, and if we see any other system of medicine, maybe allopathy, maybe homeopathy, right? Uh, all these kind of strengths, they are not so much integrated into other system of medicines. Now, Ayurveda is based upon the four fundamentals. One first fundamental, first principle is the dosha. Now, there are basically three doshas in which Ayurveda works upon. One is you see Vata and Pitta and Kapha. Vat, Pitta, Kapha. Right? Vat means wind. Right? Pitta means bile. Bile means our digestive system, and Kapha means phlegm. That is our throat. That is our you see sputum. That is related to our respiratory system. So these three doshas, Vata, Pitta, Kapha, they vary in a body according to the season. They vary according to in the same season by the day, time of the day. Means one particular principle is more active in morning, then another is more active in evening or in afternoon, then another is more active in evening, right? So if we control these three principles, we can control our health in a better way, right? So these three principles, they function in you see in harmony, right? To carry out the various digestive processes and to carry out the byproducts of the digested foods throughout the body. So digested byproducts, they may be you see energy providing, and they may be you see waste products. So where the energy producing product has to be traversed to, where the waste product has to be excretory product has to be traversed to. So these all are regulated by the harmonious activities of these three principles: Vat, Pitta, and Kapha. Then second fundamental is the dhatu. Dhatu is related to the tissues. Means tissues are the various systems in our body. Like though there are seven tissue types here, we are the seven dhatus. We can say seven types of tissues. Like we have the ras in traditional system of medicine. We call it ras. We call it a plasma. Then we have the rakt, blood. We have the mamsa. We call it a muscle. Then we have the meda, we call it a fat tissues. We have the asthi, we call it as a bone. Then we have the maza, we call it a bone marrow. And we have the shukra, we call it a semen. Now these three, seven types of dhatus or the tissues, they provide the basic nutrition to the body, right? So these see if the blood level is less, we feel weak, right? If the bones are not strong, we feel weak. If the fat tissue is not enough, we are again not strong, right? If the muscles are not appropriately grown, right, we feel weakness. So all these seven tissues, they are basically responsible for providing nutrition to the body, and all the seven are required for a healthy body. Then fourth fundamental is mal. Mal is the waste product. Now, when we eat a food, it is digested. This will be digested to produce some energy providing molecules. And also, though when after providing the energy, they are converted to the waste products which need to be eliminated from the body. And those mals, they are the stools, urine, and sweat. So their proper excretion is very important. So it is a very important to sweat in summer, even in winter, right? So if we continuously keep on sitting in air conditioned rooms where in summers where we are not sweating, that is also you see unhealthy approach, right? If we are not taking appropriate you see water, appropriate volume of water, it means we are not urinating, our body is not getting cleaned, right? Our waste products will not be excreted, right? So in Ayurveda it is said that we must pass our stool at least two times a day, morning and evening, right? So that our digestive system remains clear, right? For to digest the food or to digest anything which we eat. So see these this is the third fundamental, and the fourth fundamental is Agni, the biological fire, which is responsible for digestion. So this Agni is basically all enzymes
which are present in our body, and they are responsible for metabolism of the food, metabolism of anything which we eat. And it starts uh, from our mouths, right? So we have the different types of enzymes starting from our buccal cavity to the our you see excretory point, we call it you see colon, right? So in all through this throughout our body we have the different enzymes which metabolize the everything we eat. So if something we eat with it may be you see it may be poisonous, it may be non-poisonous, so our body is equipped to fight with those extra chemicals. So Ayurveda fundamentals according to the Susha Samhita is he whose doshas are in balance. So we have the three doshas, Vat, Pitta, and Kapha. They are in balance. Whose digestion is good, whose dhatus are functioning normally. Dhatus means your tissues are functioning normally. Whose mals are in balance, and whose self, mind, and senses remains full of bliss is called the healthy individual. So it is very important to have all the three all the four fundamentals of Ayurveda in a proper to work in a harmonious way. Now if we talk about diet, now our diet, so they basically the whenever we get you see ill, we go to any Ayurved physician, right? तो वो हम सबसे पहले ये पूछता है कि आप क्या खाते हो, आपकी डाइट क्या है ना? तो इनफैक्ट किसी भी हम ट्रेडिशनल सिस्टम किसी वैद होम्योपैथ या किसी के पास जाते हैं तो हमारा वो हमारी जो हिस्ट्री लिखते हैं तो वो ये देखते हैं कि आप क्या खाते हो, आपका रूटीन क्या है, आपको अगर ये खाते हो तो आपको कैसा लगता है ना? जैसे कुछ लोगों को होता है कि अगर वो एप्पल खाते हैं तो उनके चेहरे उनको उनको स्वेटिंग ज्यादा होती है, राइट? कुछ लोगों को खाने से उनके फोरहेड पे पसीना आ जाता है, राइट? तो ये अलग अलग हमारे रिएक्शंस हैं टू द टू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, राइट? तो सबसे पहला है कि डाइट, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए एज पर द आयुर्वेदा. सो एज पर द आयुर्वेदा हमारी डाइट में सारे वी हैव बेसिकली 6 टेस्ट, सारे 6 के 6 टेस्ट होने चाहिए. स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर, स्ट्रिंजेंट एंड पंजेंट. एंड उसका अगर हमने खाना हो, सो इट इज बेसिकली आयुर्वेदा इज डिपेंड अपॉन what we eat and when we eat and how much we eat. So what we eat means हम क्या खा रहे हैं, राइट? तो हमें ये नहीं है कि सिर्फ मीठा ही खाना है या सिर्फ नमकीन ही खाना है, राइट? जब हमने खाना खाना है तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, राइट? एंड कब खाना है, at what point. So if you see this circle here, right? So if we our day starts at 6 a.m., right? Sun rises at around 6 a.m. On an average, right? Then the first principle that is a kapha, right? Kapha, first dosh which is active at that point of time is kapha, and second pith is active between 10 a.m. to 2 p.m. and then from 2 p.m. to 6 p.m. Vata is active, then again kapha, then pith, and then vat. So this is the cycle, right? So that's why in Ayurveda it is said that we should take maximum amount of food, right, during the afternoon. Means when the sun is at the top, sun is at its peak, right? Because our body's enzymes, our body's tissues, they function with the movement of sun. So as the sun rises, it starts heating up, so our body also starts heating up. So at its peak, our body system, our body tissue system is functioning at its top, it at its peak, and then its functioning starts cooling down, right? So whatever we eat in the afternoon, everything will be digested, right? So that's why it is said that we should eat maximum in the afternoon and minimum in the night, or minimum in the evening. So also if we see this time, the 6 a.m. this is called as a professor according to Ayurveda, right? 6 a.m. to 10 a.m. is called as a personal time, means we should devote to ourselves. It is a me time, right? Personal time means
You see, exercise, it means playing with the nature, giving yourself your some time. And then from 10 a.m. to 6 p.m. is the working time. That is the total professional time, right? And then from 6 p.m. to 10 a.m. that is a personal time that includes family and friends. तो हमें पता है कि जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जब हम अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, तो जो इवनिंग टाइम होता था, इवनिंग टाइम यूज टू बी द टाइम टू बी स्पेंट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट? So that is important because that eliminates all kind of daily clutterings in our brain, right? That leads to, you see, de-stressing our body. And then from 10 p.m. to 6 a.m., that is a time which is for sound peaceful sleep, right? So during this time we are not supposed to eat anything, because our body system, our tissue systems, our dhatus, they are undergoing self repair during this time. And how much we should eat means, the see, solid food for any full meal, 50% should be solid food, 25% should be liquid, and 25% should be free, means our stomach should not be filled to the full capacity. It should be, you see, empty by at least 25%. That's why it is said that there is a reason, it's said that we should eat our food very slowly with full chewing, properly chewing, अच्छे से चबा चबा के खाना है. तो आयुर्वेदा में ये भी कहते हैं कि हमको पानी को खाना है और रोटी को पीना है. रोटी को पीने का मतलब क्या है कि रोटी को इतने अच्छे से चबाएं कि वो चबा चबा के वो पानी जैसा बन जाए, हम उसको पी लें, राइट? तो उसका पर्पस क्या है धीरे धीरे खाने का, और इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है कि जब हमारे स्टमक में, जब हम बहुत तेजी से खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक बहुत जल्दी जल्दी भरता है, राइट? तो जब हमारा स्टमक फुल हो रहा है तो स्टमक ब्रेन को सिग्नल देता है. तो वो जो सिग्नल है, वो जो हमारा धातु है, वो एक स्लो प्रोसेस है, राइट? सो इफ वी ईट स्लोली, राइट, वेरी स्लोली, राइट, विद आफ्टर प्रॉपर च्यूइंग, तो इसलिए कहते हैं हमें 32 दांत दिए हुए हैं, सो दैट हमें हर एक ग्राही को 32 टाइम चबाना है, राइट? हर एक पोर्शन को 32 टाइम चबाना है. तो उससे क्या होगा कि हम कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, राइट? तो जैसे हम कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाते 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 डकार आया, मतलब वी बर्प, राइट? सो दैट बर्प मींस इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ फुलनेस, राइट? तो जब बर्प किया हमने, इट मींस वी शुड स्टॉप ईटिंग. तो अगर हम फास्ट ईटिंग कर रहे हैं तो सिग्नल लेट आएगा, लेकिन हम उससे, जब तक सिग्नल आएगा तब तक हम एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं, राइट? सो that is the speed of eating. Okay, so coming to the Ayurvedic treatment, so although we are following, we cannot follow the, you see, the diet as per the Ayurveda, right? So whenever there is a deviation, we will fall ill, we will fall sick, right? And whenever there is an ailment, we need a treatment. So Ayurvedic treatments, there are the different kind of treatments. So these include yoga, pranayam, then dietary modifications, meditation, astrology, sound, or so on, right? So there are the different types of Ayurvedic treatments, and all these different kind of treatment, they have their own specific utility. Now, this Ayurveda, it is now globally accepted. It's not just now limited to, you see, India. It is also it has also traveled to all parts of the globe, right? And the modern science has very well accepted that Ayurveda is the origin of all medicines. So this modern science, it has helped in the identification of very various drugs, various chemicals, various treatments from Ayurveda only, right? And they are very well used. For example, if we talk about anti-cancer drug Taxol, there is a one drug, Taxol, right, which is used. It is provided by it is you see, contributed by plant. If we talk about anti-malarial drug artemisinin,
that is also provided by plant. If you talk about aspirin, aspirin is also provided by plant. If you talk about chloroquine, quinine, right? So these all drugs, they are just limited numbers, right? So their basic source is the plants only. So these Ayurvedic drugs, we can say plants, they being natural in origin because they are the plant source. So these are considered safe and without any side effects. And this is something troublesome problem. But because of global acceptance of Ayurveda, uh, this data indicates shows that how popular Ayurveda is and how worldwide it is accepted. 80% population of the developing countries, they rely on Ayurveda, or they rely on the herbal drugs at the first line of treatment. And World Health Organization has prepared its essential medicine list. Essential medicine list means those are drugs which are essential to treat certain disorders or certain diseases, and 11% of those essential medicines, they are herbal in nature. And more than 1000 plant species, they are used by Indian herbal industry to develop certain to develop several products. And because Ayurveda or this Indian system of medicine, this has unlocked the curative potential of several plants and herbs. Means you this plants, they provide us this is such a you see great diversity that the plants can be used for the treatment of any disease provided they are explored well. But this popularity of Ayurveda, right? It has led to you see an over enthusiasm, or you can say the over expectations, or you can say the more assertiveness about this Ayurvedic system of medicine, and this has led to the exploitation of the natural resources. Uh, like we talked about the Taxol, which is used as an anti-cancer drug. No, Taxol was was isolated from Taxus baccata, and and it is isolated from the roots of that. No, sorry, bark of that Taxus baccata, and it was exploited to such an extent that now Taxus baccata is near extinction. Now it has been banned to isolate Taxol from Taxus baccata, and it has also led to the misuse of herbs. So when we say that over enthusiasm of the system means everything we say that we can cure with these this thing with the drugs, we can cure this particular medicine, particular disease with herbs, है ना, हम कैंसर भी ठीक कर सकते हैं, हम एड्स भी ठीक कर सकते हैं, हम सोरियासिस भी ठीक कर सकते हैं, हम इन्फेक्शन भी ठीक कर सकते हैं, हम स्किन डिजीज भी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी ठीक कर सकते हैं, राइट? तो ये एक ना ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है. सो दैट लीड्स टू सर्टन मिथ, है ना, कि इसके साथ ये करना चाहिए, इसके साथ ये करना चाहिए, इसको वैसे लेना चाहिए, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, right, exploitation of natural resources leads to unjust commercial interest. Unjust commercial interest means we start exploiting the natural resources to meet our, you see, commercial gains. And when we misuse the herbs, right, it leads to adverse health issues. But misuse of herbs means हर एक हर्ब में हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, तो एक हर्ब का वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज होता है, एज एंटी डिफेक्टिव भी यूज होता है, एज एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है, वो एज अ पेन रिलीवर भी यूज होता है, राइट? इट कैन बी यूज एज एंटी कैंसर ऑल्सो. लेकिन वो हम उसको इतना ज्यादा ओवर एंथुजियाज्म हो जाते हैं कि हम उसको मिस यूज करना शुरू कर देते हैं, एंड व्हेन वी मिस यूज इट लीड्स टू एडवर्स हेल्थ इश्यूज, इट लीड्स टू साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. And because of this over exploitation, because of this misuse, because of this commercial gains, now there are you see flood of herbal drugs or herbal products or the Ayurvedic products in the market. And you go to any pharmacy which is dispensing, which is you see selling
these herbal products or these Ayurvedic products, and you will find a medicine for any kind of drug, any kind of disease. Now, so what are those myths and herbal about the herbal products? Because why they are getting popular? Why Ayurveda is not as, क्योंकि आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा हमारा टाइम टेस्टेड सिस्टम है, लेकिन आयुर्वेदा के ऊपर अगर हम विश्वास करने की बात करें, हमारा विश्वास नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करने वाले वैद्य जो फिजिशियंस, दे आर नॉट रेडिली, दे आर नॉट एक्चुअली अवेलेबल, क्योंकि उनकी जो हमने शुरू में बात करी थी नॉलेज, राइट? तो इसको डायग्नोस करने का एक सिस्टम होता है, तो वो डायग्नोस करने का जो सिस्टम है वो ज्यादातर बुक्स में नहीं लिखा होता, वो एक जनरल प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। बट जैसे हमने कहा, हर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक अपने आप में एक संसार है, राइट? सो उसके अंदर अगर उसका डाइट प्लान ये है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसका डाइट प्लान ये है, उसकी दिनचर्या ये है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर वो हम प्रॉपरली कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो वो नॉलेज डेवलप नहीं होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो धीरे 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 जो आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं वो कम होते जाते हैं। एंड व्हेन इट हैपेंस तो हम एक सेल्फ मेडिकेशन के तरफ भी चले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि करेला है, करेला खाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। हमने कहा हल्दी है, हल्दी खाने से इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है। हमने कहा लहसुन है, लहसुन खाने से लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाता है, राइट? तो वो हम सारे वही फॉलो करने लग जाते हैं, वो एक कई बार मिथ बन जाता है, राइट? और हम उस मिथ को इग्नोर कर देते हैं, ये मानकर के ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, ये तो प्लांट प्रोडक्ट है, ये सेफ है। सो they are the two basic things, naturality and safety, because they are herbal drugs. So वही हम कुछ एक myths जो है वो हम आज थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। We have time. How much time we have? Sir, half an hour. Half Okay. an hour. Half an hour. So first myth is herbal medicines are safe because it is a natural, right? Now this myth is very dangerous. Naturality does not mean that it will give you the safe product, right? Yes, there are the two reasons for this particular myth. One is they are into practice since thousands of years, and there are some scientific based evidence also, right? So if there is a proper documentation in our literature, this particular herb is used for this particular type of disease, then it is a safe, it is okay. If there are some scientific based experiments conducted, तो हम कह सकते हैं कि ये herbal product safe है, right? But simply ये मान लेना without getting into the literature, without seeing the literature, without verifying its scientific experiments कि ये तो नेचुरल है, ये तो सेफ ही होगा। जैसे अगर हम किसी जंगल में जा रहे हैं, हमें किसी ने बोल दिया कि यार ये प्लांट जो है ये बहुत अच्छा होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको चख के देखो। पता नहीं वो क्या है, हमें क्या पता, चख के देखो, चख के देखो, हो सकता है कि हमारी आवाज चली जाए, हो सकता है हमारा कुछ और हो जाए। सो साइड इफेक्ट किसी के भी हो सकते हैं। सो नेचुरलिटी डज नॉट मीन इट इज सेफ। और हर एक प्लांट के इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों होते हैं। जैसे एक अगर हम सिंथेटिक ड्रग की मैं एग्जांपल लूं, एक ड्रग है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल MINOXIDIL। मिनॉक्सिडिल जो है ये ड्रग ओरिजिनेट हुई थी एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था, इट प्रमोटेड हेयर ग्रोथ। ये उनमें ना जो ये ड्रग लेते थे उनमें एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लग जाती थी। तो ये साइड इफेक्ट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट था कि इसकी डोज को चेंज करके अब ये नाउ मिनॉक्सिडिल इज नॉट यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इट इज यूज्ड एज अ हेयर ग्रोथ ड्रग। तो जितने भी अगर आप प्रोडक्ट देखोगे जो क्लेम करते हैं कि ये हमारा हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट है, आप इसको एप्लीकेबल, आप उसको या स्कैल्प पे लगाओ, आप यहाँ पे सिर पे लगाओ, मॉलिश में उसकी एप्लीकेशन करो, टॉपिकल सोल्यूशन है वो लगाओ, उसमें मिनॉक्सिडिल होती है। तो हर एक ड्रग जो है वो, हर एक प्लांट वो ड्रग भी है,
वो पॉइजन भी है. It all depends upon the dose. It all depends upon what kind of effect it has. Let's say हमने ये एग्जांपल लेते हैं. This is one plant. In English we call it a dandelion. In Hindi we call it a kanfool. Right now, this root of this particular plant is laxative. Laxative means it increases the bowel movements, so that causes a stool that facilitates to pass stool, and its leaves, they are diuretic, means they increase the urination process. Now अगर हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें लगता है कि ये प्लांट जो है ये यूरिन पास करने में हेल्प करता है, तो हमने पूरा प्लांट लिया, उसको जड़ से उखाड़ा, उसको खाना शुरू कर दिया, तो हमने रूट भी साथ में खा लिए, तो यूरिन तो पास होगा ही, साथ में जो स्टूल है उसकी भी डायरिया भी हो जाएगा. राइट. सो एवरी प्लांट has different effects, right? And every plant part, root, it's a leaf, it's a flower, it's a fruit, right? It's a bud, it's a seed, right? It's a bark, right? They usually they have the different activities because they have the different kind of chemicals. Myth 2, second myth है कि one herbal product cures multiple diseases. ठीक है. हम कहते हैं कि एक हर्बल से कई सारी चीजें ठीक हो जाती हैं. जैसे अगर हम नीम की बात करें, तो नीम का जो सोल्यूशन है वो एज एंटीसेप्टिक भी यूज होता है, और नीम के जो पत्ते हैं उनको खाते हैं तो वो एज एंटी डायबिटिक भी होते हैं. उसी तरह से हल्दी है, हल्दी एंटी बैक्टीरियल भी है, और हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, पेन भी रिलीव करती है. जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई अंदरूनी चोट लगी है तो हल्दी का दूध पियो, ठीक है. लेकिन वन हर्बल प्रोडक्ट क्योर मल्टीपल डिजीजेस, ये ठीक है, लेकिन इसके लिए if we are taking a one particular product for other disease, we should be very much sure about it. अगर मैं एस्प्रिन की एग्जांपल लेता हूँ, now aspirin is not a synthetic drug, it is isolated from a plant, right? And that plant was actually used टू ट्रीट रूमेटिज्म. रूमेटिज्म मींस वो जो हमारे गठिया का दर्द है उसको ठीक करने के लिए वो प्लांट यूज होता था. तो उसको जब हमने स्टडी किया, साइंटिफिकली स्टडी किया, तो उसमें से जो एक्टिव कंपाउंड जो हमने आइसोलेट किया वो था एस्प्रिन. तो एस्प्रिन जो है ओरिजिनली इट वाज यूज्ड एज एनर्जेसिक ड्रग. एनर्जेसिक ड्रग मींस ये पेन रिलीव करता है, हेडेक के लिए यूज करते थे, जैसे डिस्प्रिन है अभी भी यूज करते हैं. But later on, it was also found to have other activity. We call it antiplatelet aggregation activity. मतलब ये क्लॉट, ब्लड में क्लॉट बनने से रोकती है. तो जितने भी ये मतलब खून को पतला करते हैं, तो जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जो भी बीपी की, हाइपरटेंशन की दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर्स उनको आजकल एस्प्रिन भी रिकमेंड करते हैं. जैसे मोस्ट कॉमन साइट ब्रांड नेम है इकोस्प्रिन, तो उसमें 50 मिलीग्राम की डोज होती है. अब एस्प्रिन का जो है वो एज एंटी कैंसर भी इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है. तो हर एक केमिकल के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डोज, राइट, एंड हाउ दे आर एडमिनिस्टर्ड, राइट. उसी तरह से एक हर्बल प्रोडक्ट के भी मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, बट वो हमको यूज करना है किस के लिए यूज करना है, उसके लिए हमें उसके लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में लिटरेचर स्टडी करना पड़ेगा. तीसरा मिथ है हर्बल मेडिसिन दे हैव नो साइड इफेक्ट्स. अब ये भी बहुत डेंजरस है. सी, साइड इफेक्ट क्या होता है? हमने एक दवा ली, जैसे हमने मिनॉक्सिडिल की बात करी थी. मिनॉक्सिडिल का ओरिजिनल इफेक्ट था एंटी हाइपरटेंसिव, है ना, कि वो ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट था हेयर ग्रोथ. तो दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? साइड इफेक्ट. सो एनी इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, chemical or other medicine that is in addition to its intended purpose, intended effect, right, is called as side effect. वो जो side effect है वो harmful भी हो सकता है, unpleasant भी हो सकता है, fruitful भी हो सकता है. अगर वो fruitful हो गया तो हम उसको यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं efficacious, good effect. अगर वो unpleasant है हम उसको करते हैं side effect.
तो लेकिन साइड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो जनरली वी टेक इट इन ए नेगेटिव सेंस, साइड इफेक्ट मतलब गलत, राइट? सी फॉर दैट मैटर, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट ओपीएम, ओपीएम है ना, ओपीएम बहुत सारे जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में ओपीएम इज लीगल, उसकी सेल को लीगल माना जाता है। Now opium is a very good drug, but the only problem with the opium is that people do not know how much to use it and how to use it, right? So when we use it without any knowledge, without or say half knowledge, then it becomes it becomes a poison. एंड फॉर दैट मैटर हम कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ठीक है, पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, राइट? अगर हम पानी भी बहुत ज्यादा पिएंगे ना तो वो भी एक उसके भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं, दैट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ यू सी मिनरल्स फ्रॉम आवर बॉडी, राइट? सो अगर जैसे कहते हैं कि धूप में बैठो तो विटामिन डी बनता है, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, बिल्कुल होती है, लेकिन कितना बैठना चाहिए? ज्यादा बैठने से सनबर्न भी हो सकता है। सो ओवरडोज इज मतलब कितनी डोज में हमने कौन सी चीज को लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हम कहते हैं कि हल्दी को खाओ, हल्दी खाओ, ठीक है, हल्दी खानी चाहिए, कितनी हल्दी खानी चाहिए? ज्यादा हल्दी खाएंगे तो वो हल्दी के अपने साइड इफेक्ट है, मुंह में छाले हो जाएंगे, है ना? हमारा जो है एसिडिटी हो सकती है। अदरक कितना खाना चाहिए? ज्यादा अदरक खाएंगे उससे भी एसिडिटी हो जाती है, राइट? मुंह में छाले हो जाते हैं। सो एवरी ड्रग हैज इफेक्ट एज वेल एज साइड इफेक्ट। जैसे कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल तो मार्केट में बहुत मिलता है और आजकल इसको बॉडी मसाज के लिए भी यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज एक्चुअली अवेलेबल एज ए वीड, रोड साइड पे अवेलेबल रहता है, राइट? सो इट्स सीड्स आर वेरी टॉक्सिक, राइट? इट्स फ्लावर्स आर टॉक्सिक, इट्स लीव्स आर टॉक्सिक, राइट? सो अगर ये जो लीव्स है ना, अगर हमें नहीं पता कि ये कैस्टर प्लांट है कि यार खा लो ये बहुत अच्छा है ना, तो अगर खा लिया तो वो तो साइड इफेक्ट है उसके। साइड इफेक्ट क्या है उसके? नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, ये बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। एंड सिमिलरली ये देखो, ये है हिंदी में कनेर कहते हैं इसको, पिंक ओलिएंडर, राइट? इसके जो गुड इफेक्ट्स है, गुड इफेक्ट्स क्या है? इट इज यूजफुल इन द हार्ट कंडीशंस, अस्थमा, एपिलेप्सी, कैंसर, पेन फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, लेप्रोसी, मलेरिया। देखो कितने सारे इसके इफेक्ट्स हैं, साइड गुड इफेक्ट्स हैं। मतलब कहते हैं कि एक ड्रग मल्टीपल कंडीशन में यूज की जा सकती है। सो दिस इज एन एग्जांपल। बट ये जो ड्रग है, इसकी इस ड्रग को लेना कैसे है, इसके लिए एक सेट प्रोसीजर होता है। That procedure has to be followed because every part of this particular plant, right, including seed, is poisonous, right? तो उसको किस फॉर्म में लेना है, कैसे ट्रीट करके लेना है, that is important. एलोवेरा, जैसे कुछ मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एलोवेरा, एलोवेरा बहुत अच्छी, वैसे स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है, राइट? बट अगर हम उसको खाएंगे तो अब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। जिनसेंग, जिनसेंग तो दिस इज वन ऑफ द वंडर ड्रग, जिनसेंग एंड जिंको बाइलोबा, ये वंडर ड्रग्स मानी जाती हैं टू प्रमोट इम्यूनिटी, टू प्रमोट यू सी विरैलिटी। एंड बट अगर हम ज्यादा खाते हैं इन चीजों को तो दैट कॉज ट्रबल स्लीपिंग एंड हेडेक, वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट पेन, एलर्जिक रिएक्शंस। उसी तरह से ये अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। एक और मिथ है कि हर्ब मस्ट बी टेकन वीक्स और मंथ्स बिफोर दे विल वर्क। हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत लंबा चलता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल, 6 साल ऐसे खाना पड़ता है तब जाके इफेक्ट होता है। ये एक मिथ था, है ना? ट्रू, ये मिथ, ये बहुत सारी हर्बल ड्रग्स हैं जो हमें बहुत लंबे समय तक खानी होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हम किस चीज के लिए खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग इट फॉर डायबिटीज, अब डायबिटीज जो है, जो हमारी बीमारियां होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। वन इज क्रॉनिक, सेकंड इज एक्यूट। क्रॉनिक मतलब जो बहुत लंबी चलेंगी, जैसे डायबिटीज है, एक बार डायबिटीज होगी तो वो लंबी चलती है। अगर हमारे हाइपरटेंशन होगी तो वो लंबा चलता है, क्योंकि वो धीरे 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 डेवलप होती है। तो जो बीमारियां धीरे 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 डेवलप होती हैं उनको क्रॉनिक में डिजीजेस कहते हैं, और जो बीमारी
एकदम डेवलप होती है उसको हम एक्यूट कहते हैं। एक्यूट मतलब एक्यूट बीमारी जैसे एक्सीडेंट हुआ, हमारे कहीं चोट लगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई, तो वो एक्यूट प्रॉब्लम है, वो जल्दी आई जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। जैसे हमारा हेयर लॉस है, अगर हेयर लॉस है तो वो धीरे धीरे हेयर लॉस होता है, धीरे धीरे अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर हमने चाहते हैं कि हमारे बाल दोबारा से आ जाएं, तो उसके लिए बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। जैसे आजकल समर विंटर है, तो विंटर में कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन कोल्ड कफ एंड ऑल दैट, तो वो इमीडिएटली आता है, तो उसके लिए इमीडिएट रिलीफ है हमारे पास। टर्मरिक है, जिंजर है, तुलसी है, पेपरमिंट ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, क्लोव है, रोज मतलब हमको गुलकंद की फॉर्म में खाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये इमीडिएट रिलीफ देती हैं आपको। इफ इट इज अ सोर थ्रोट, इफ इट इज अ कॉमन कोल्ड, इफ इट इज अ हेडेक, राइट, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, अगर रात को नींद अच्छे से नहीं आती है तो रात को गर्म पानी के साथ गुलकंद ले लेते तो बहुत अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट मिथ है कि हर्ब्स आर ऑलवेज बेस्ट व्हेन यूज्ड फ्रेश नॉट ड्राई। हमेशा फ्रेश खाने चाहिए, ड्राई नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत डेंजरस मिसकंसेप्शन है। क्योंकि कुछ एक हर्ब्स ऐसी होती हैं जो फ्रेश खानी चाहिए, कुछ एक हर्ब्स होती हैं जो फ्रेश नहीं खानी चाहिए, राइट। सो देयर आर सर्टेन हर्ब्स व्हिच आर टॉक्सिक व्हेन आर यूज्ड फ्रेश, राइट। एंड क्यों टॉक्सिक, जो फ्रेश होते हैं तो उसको टॉक्सिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हर्ब्स हैं they have the tendency to produce certain chemicals which we call them secondary metabolites. Secondary metabolites क्या है? जब भी किसी प्लांट को हम इंजर करते हैं, हम उसको जैसे जड़ से उखाड़ा, उसका पत्ता तोड़ा, उसका फ्लावर तोड़ा, या उसमें से हमने बार्क छीला, तो हमने उसको इंजरी करी। तो इंजरी करते हैं तो वो उस इंजरी को विदहोल्ड, इंजरी के पेन को बियर करने के लिए वो अपने अंदर एक नए केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। एंड दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर बेसिकली ड्रग्स। यही ड्रग्स जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स मतलब ड्रग डज नॉट मीन के वो जो एडिक्टिव ड्रग्स है, मतलब मॉर्फिन, कोडीन, ये मतलब ड्रग का मतलब ये नहीं है कि वो ये मिथ है, मेथ है, या जो हम जो नशे के लिए यूज करते हैं। ड्रग का मतलब वो नहीं है। ड्रग का मतलब एनी केमिकल विच ऑल्टर्स अवर बॉडी फंक्शंस, राइट, उसको ड्रग कहते हैं। तो वो ड्रग मेडिसिन भी यूज होती है, पॉइजन भी यूज होती है। जब वो ड्रग के साइड उसको एक्सेसिवली यूज करते हैं तो एज ए पॉइजन है। तो जितनी भी ये नशे वाली दवाइयां हैं हम इनको एज ए पॉइजन कह सकते हैं। तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, एंड दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मे बी टॉक्सिक, दे आर यूजुअली टॉक्सिक, राइट। तो अगर हम वो फ्रेश लेते हैं तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं। तो जैसे ये है तेज पत्ता, राइट। तेज पत्ता तो हम घरों में यूज करते हैं किचन में। तो ये जो फ्रेश बे लीव्स हैं, जो फ्रेश तेज पत्ता है, दे टेंड टू ऑफर मोर सब्टल एंड डेलिकेट फ्लेवर, making them ideal for dishes with shorter cooking times or lighter flavor, whereas the dried bay leaves are known for their more potent and intense flavor. तो ड्राई फॉर्म में और उसका फ्रेश फॉर्म में उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। Another myth is all herbs are fine to consume with all other medicines, all other medications. अब ये भी काफी गलत है। जैसे हमें फॉर एग्जांपल कोई शुगर की बीमारी हुई, तो वो डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी, वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है, तो साथ साथ में हम कहते हैं कि साथ साथ में देसी दवाई भी खा लो। देसी दवाई मतलब कड़ी पत्ता खा लो, मेथी दाना खा लो, नीम खा लो, करेला खा लो, ये खा लो। तो वो जो हर्बल ड्रग है और जो सिंथेटिक ड्रग है, और हम उसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं, वो आपस में उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार डेडली भी हो सकता है, राइट। सो व्हेन द टू ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दे आर कंबाइंड, they can lead to more prominent effects that can be good or bad. They can lead to opposite effects, मतलब दोनों के इफेक्ट ऑपोजिट हो सकते हैं,
they can lead to change in the, you see, फार्माकोकाइनेटिक्स. टेक्निकली फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब वो ड्रग कब एब्जॉर्ब हुई, कब डिस्ट्रीब्यूट हुई, कब मेटाबोलाइज हुई, कितनी देर में एक्सक्रीट हुई. तो जैसे कोई भी दवा है, उसकी अगर हम कहते हैं कि इसको दिन में, किसी ड्रग को दिन में एक बार लेना होता है, किसी ड्रग को दिन में 3 बार लेना होता है, किसी को 2 बार लेना होता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो ड्रग कितनी देर में एब्जॉर्ब होएगी हमारी बॉडी में जाके, कितनी देर में वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होएगी, कब वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, मेटाबोलाइज मतलब वो खत्म हो जाएगी, और कब वो एक्सक्रीट होएगी. तो वो उसके साइकिल पे डिपेंड करता है कि हमको ये दवा कितनी बार लेनी है. तो अगर हम 2 ड्रग्स मिक्स कर रहे हैं तो एक ड्रग दूसरी ड्रग के ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रोफाइल को ऑल्टर कर सकता है. सो इसीलिए हो सकता है उसका जो इफेक्ट चाहिए होता है वो ना ही आए, राइट. another myth is all herbs are fine to consume with all other medication. ये वही हो गया. इसमें भी जैसे ये एग्जांपल ली है हमने रेड ईस्ट राइस. रेड ईस्ट राइस जो है, दिस इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ हर्बल ड्रग. ये दे आर रिच इन स्टैटिन्स. और आप में से किसी ने नाम सुना होगा लिपिटोर और क्रेस्टोर का. अगर यू हैव कम अक्रॉस सम पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो उनको लिपिटोर, क्रेस्टोर और बेसिकली स्टैटिन्स लाइक फ्लूवास्टैटिन ऐसी ड्रग्स देते हैं, तो वो उसको कम करता है. तो अगर किसी इंसान को स्टैटिन्स के ऊपर ड्रग दी जा रही है और साथ में वो रेड ईस्ट राइस भी खा रहा है, तो ये पोटेंशिएशन ऑफ इफेक्ट हो गया, मतलब वो डबल स्टैटिन खा रहा है, राइट. तो कौन से ड्रग के साथ कौन सा फूड खाना चाहिए? हम नॉर्मल फूड खाते हैं वो ठीक है, लेकिन कई बार हम स्पेशलाइज फूड खाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, उस मेडिकेशन का उस पर्टिकुलर फूड के साथ कोई रिएक्शन ना हो. Another is natural supplements are always a safer choice. सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स आजकल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं कि कोई भी सप्लीमेंट ले लो वो काफी अच्छे रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे आयुर्वेदिक सिर्फ शंख पुष्पी. अब शंख पुष्पी जो है वो मेमोरी एनहांसर है. बच्चों को यूजुअली देते हैं कि उनकी जो मेमोरी है, उनकी याददाश्त अच्छी हो जाए. अब एक और ड्रग है फेनिटोइन, जो एलोपैथिक है. फेनिटोइन देते हैं उन पेशेंट्स को जिनको एपिलेप्सी होती है. तो जिनको एपिलेप्सी होती है ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, तो हम ये मानते हैं कि एपिलेप्सी होगी तो इसकी ब्रेन थोड़ा सा अफेक्ट हो गया, इसकी याददाश्त अफेक्ट होगी, तो उसको साथ में शंख पुष्पी सिरप भी दे दो, थोड़ी सी देसी दवाई है, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना. लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जो शंख पुष्पी है, दिस इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन. मतलब फेनिटोइन की को बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट कर देता है ये. तो हमने जो डोज ले रहे हैं वो ले रहे हैं विदाउट शंख पुष्पी, बट हाँ साथ में शंख पुष्पी भी ले रहे हैं. तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि फेनिटोइन अपना एक्शन नहीं करेगा, तो हमारा एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट नहीं होगा. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद द फिजिशियन कि हम अगर ये ड्रग ले रहे हैं तो इसके साथ हम और क्या ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लाइक दैट. तो ये और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गार्लिक. गार्लिक अगर हम क्लोरजॉक्साजोन है ना, ये क्लोरप्रोपामाइड इज एंटी डायबिटिक ड्रग, राइट. फ्लूनिडायोन, दिस इज एंटी कोएगुलेंट ड्रग, राइट. This is a paracetamol. Ritonavir is an antiviral drug. Squanavir is antiviral drug. Warfarin is anticoagulant. मतलब ये खून पतला करने के लिए ये एंटीवायरल ड्रग हो गई. इनके साथ गार्लिक की एक्टिविटी, इनके रिएक्शंस हैं, राइट. तो अगर हम ये मेडिसिन खा रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम गार्लिक कितना खा रहे हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं खा रहे. ग्रीन टी, हम कहते हैं ग्रीन टी बहुत सेफ है, इट्स वेरी गुड इम्यूनोलेटर, वेरी गुड, ठीक है, ग्रीन टी बहुत अच्छी है. लेकिन जब हम ग्रीन टी कितनी ले रहे हैं, जैसे फॉलिक एसिड अगर हम खा रहे हैं, तो
फोलिक एसिड अगर हम खा रहे हैं साथ में ग्रीन टी ले रहे हैं तो ग्रीन टी ने फोलिक एसिड की कंसंट्रेशन को, इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देना है। तो फोलिक एसिड खाने का कोई फायदा नहीं है अगर हम साथ में ग्रीन टी ले रहे हैं, राइट। सिमिलरली सिम्वास्टैटिन जैसे हमने बात करी स्टैटिन की कोलेस्ट्रॉल के लिए, राइट। तो स्टैटिन इंटॉलरेंस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज सिम्वास्टैटिन ब्लड लेवल्स। तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देता है। डाइटरी ईस्ट्रोजेंस, जैसे बहुत सारे फूड्स हैं जिसमें ईस्ट्रोजेंस होते हैं। ईस्ट्रोजेंस दे आर द steroidal compound which are required for you see normal body functions. So estrogens they particularly regulate the woman's menstrual cycle, right? तो menstrual cycle के लिए बहुत important है estrogen। तो adolescence में this estrogen they play a primary role in secondary sex development of secondary sex characters। अब ये जो कुछ फूड है जैसे ये मिल्क है, ये बीन्स है, ये है ना, ये जैसे ग्रीन पी है ना, सोया है, टोफू है, राइट। तो ये सारे दे आर रिच इन फाइटोएस्ट्रोजेंस। तो हमने कितना एस्ट्रोजन, अगर डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दी है जो प्रो एस्ट्रोजेंस हो और साथ साथ में हम ये वाले प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं, इट मींस वी आर टेकिंग ओवरडोज ऑफ एस्ट्रोजेंस। तो अगर हम डाइटरी एस्ट्रोजेंस ज्यादा खा रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स हैं लेकिन उसके रिस्क भी हैं, ओबेसिटी, कैंसर, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। तो these are the some food items which are rich in dietary estrogens: flax seeds, sunflower seeds, sesame seeds, almonds, walnut, राइट। तो ये कुछ एक जब हम ये खा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि डाइटरी एस्ट्रोजेंस कम ज्यादा ले रहे हैं तो हमें बाहर से एस्ट्रोजेंस कम करने पड़ेंगे। Then we have the herbal products do not have a shelf life। यूजुअली कहते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आप जितना मर्जी देर तक रख लो। हालांकि आजकल जो हम मार्केट से हर्बल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उनके ऊपर शेल्फ लाइफ लिखी होती है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं यूजुअली कि ये तो कभी एक्सपायर होते नहीं है, इनकी थोड़ी शेल्फ लाइफ होती है, बट ऐसा ट्रू नहीं है। हर्बल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बेसिकली केमिकल्स, बल्कि दे आर कंटेनिंग मोर केमिकल्स। अगर हमने पैरासीटामोल की ड्रग ली, क्रोसिन की टैबलेट ली, तो क्रोसिन में सिर्फ एक ही ड्रग है, पैरासीटामोल। लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल तुलसी खाई तो तुलसी में 50 केमिकल्स है, तो हम 50 केमिकल खा रहे हैं। तो अगर पैरासीटामोल की शेल्फ लाइफ है तो उन 50 केमिकल्स की शेल्फ लाइफ होगी ना। तो हर्बल ड्रग्स की भी शेल्फ लाइफ होती है। तो जो हर्बल की जो शेल्फ लाइफ होती है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। इट इज मेंशन्ड इन अवर सुश्रुत संहिता, राइट। इट इज द नेम ऑफ सवीर्त्य अवधि। सवीर्त्य अवधि मीन्स द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वीर्य मीन्स द पोटेंसी ऑफ एनी ड्रग रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू एनवायरमेंटल और माइक्रोबियल डिटोरिएशन। मतलब उसका जो इफेक्ट है जो मेंटेन रहना चाहिए, राइट। तो जैसे ये देखो, ये यहाँ पे 12वीं शताब्दी में बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ लिखी हुई है। डिकॉक्शन मतलब जैसे हम वो बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं पानी में उबाल के, है ना, काढ़ा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, राइट। उसकी शेल्फ लाइफ 3 घंटे है। हम किसी चीज का पेस्ट बनाते हैं, राइट, उसकी लाइफ 3 घंटे है। किसी चीज को हम जूस बना लेते हैं, जैसे अगर हमने करेले का जूस बना लिया, उसको क्रश करके अच्छे से जूस निकाल लिया, उसका जिंजर का जूस निकाल लिया, राइट, उसकी लाइफ 3 घंटे है। तो लाइक दिस पिल मतलब टैबलेट्स, इनकी शेल्फ लाइफ 12 महीने है। तो ये जो शेल्फ लाइफ वाला कंसेप्ट है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से है। तो ये एक गलत धारणा चलनी शुरू कर दी थी कि इनकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती। एंड दिस इज वेल नोटिफाइड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स। ये वो रूल्स हैं जो इंडिया में ड्रग्स की सेल को रेगुलेट करते हैं। एंड दे ऑल्सो मेंशन दैट कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगर वो चूर्ण है तो उनकी शेल्फ लाइफ 1 साल होगी, अगर वो टैबलेट है उनकी शेल्फ लाइफ 2 साल होगी, राइट। सो लाइक दिस, so they have the different shelf life, so now it has become mandatory। so shelf life होती है, लेकिन कितनी shelf life होती है वो यूजुअली क्या करते हैं कि सभी की एक सी shelf life दे दी। जैसे हमने ऊपर ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ और लिक्विड ओरल्स ये लिखा है
सिरप और लिक्विड ओरल की शेल्फ लाइफ है 3 साल। अब इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जितने भी सिरप होंगे उनकी शेल्फ लाइफ 3 साल होगी, लेकिन वो सिर्फ किस चीज का होगा? वो सिर्फ शंखपुष्पी का होगा, वो सिर्फ ब्रह्मी का होगा, वो सिर्फ करेले का होगा, या आंवले का होगा, या एलोवेरा का होगा, किसका होगा वो मेंशन नहीं किया हुआ, बस सिर्फ की 3 साल। तो हमने एक अपनी लेबोरेटरी में हमने शेल्फ लाइफ स्टडी करी। हमने मार्केट से 3 तरह के शंखपुष्पी सिरप लिए, उनकी हमने स्टेबिलिटी स्टडीज करी एज पर द WHO गाइडलाइंस 12 महीने के लिए, और उसको हमने 3 तरह के टेस्ट किए, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब उसमें जो सिरप है, सिरप की विस्कोसिटी, सिरप की पीएच, सिरप का कलर, सिरप का टेस्ट, ये फिजिकल टेस्ट आ गए। फिर केमिकल, उसमें कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब कौन कौन से कंपाउंड है, उनका कंटेंट कितना वेरी हो रहा है ना, तो उसमें चेक किया। फिर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हमने किया कि सिरप जो है, शंखपुष्पी सिरप किस लिए यूज करते हैं? मेमोरी के लिए। तो हमने उसकी एनिमल मॉडल्स लगा करके हमने उसकी मेमोरी एक्टिविटी भी चेक करी, राइट, कि उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये देखो, अगर हम फिजिकल वैल्यूएशन की बात करें तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है सारे की, है ना। चलो, ये अगर हम ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा डेंजरस नहीं भी मानते हैं, नो प्रॉब्लम। केमिकल इवैल्यूएशन देखिए, एक होता है इसमें टोटल फिनोलिक कंटेंट। टोटल फिनोलिक कंटेंट मतलब हमारे जितने भी प्लांट्स हैं इसमें मल्टीपल पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, ये सारे अगर फिनोलिक कंटेंट का देखो, टोटल फिनोलिक कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो गया 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर इनका कंटेंट 14 से 25% डिक्रीज हो गया। अगर हमने और केमिकल इवैल्यूएशन करी यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स HPLC, तो HPLC में ये एक स्कोपोलेटिन कंपाउंड है। स्कोपोलेटिन है इसका शंखपुष्पी का मेन कंपाउंड। जैसे नीम में एजादिरेक्टिन होता है, जैसे हमने बात करी थी टैक्सस बैकेटा की, उसमें टैक्सोल होता है। आर्टिमिसिया एनओ में आर्टिमिसिनिन होता है ना। सिनकोना बार्क जो हम घर में यूज करते हैं एज स्पाइसेस, उसमें क्विनीन होता है, राइट। तो वो इसमें स्कोपोलेटिन होता है, और स्कोपोलेटिन का कंटेंट अगर हम देखें तो 3 बैच जो हमने 3 तरह के प्रोडक्ट लिए, उनमें स्कोपोलेटिन का कंटेंट देखो कितना कम हो गया। इट्स अराउंड 50%, इट हैज बीन 50% उसका कम हो गया कंटेंट। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करा हमने, उसकी एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है 65% से उसकी एक्टिविटी 54 पे आ गई। ऑन एन एवरेज एवरी एक्टिविटी हैज डिक्रीज्ड। तो based upon this relation, based upon this data, what we came to know कि उसकी जो एक्चुअल शेल्फ लाइफ है वो 1 साल से भी कम है। 3 साल तो वो क्लेम कर रहे हैं, है ना, बट एक्चुअल शेल्फ लाइफ 1 साल से भी कम है। नाउ दिस finding is horrible. This is an eye-opening this one finding. तो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि जो हर्बल ड्रग्स है, हर्बल ड्रग्स वो सेफ है, लेकिन उनकी सेफ्टी हर एक मेडिसिन के लिए, हर एक बीमारी के लिए हम हर एक हर्बल ड्रग नहीं यूज कर सकते। अगर उसमें शेल्फ लाइफ लिखी हुई है तो वो शेल्फ लाइफ जरूरी नहीं है जितनी वो उतनी ही हो, वो शेल्फ लाइफ उससे कम ही आएगी। ये फॉर श्योर है फॉर हर्बल ड्रग्स। हमने और भी स्टडीज करी हैं विच आर रिफ्लेक्टिंग दिस। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, अगर हम हर्ब ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखें, राइट, तो हम एक मिक्स्ड कल्चर में जी रहे हैं, राइट। सिटी कल्चर है हमारा, वो फास्ट है। अगर हम रूरल कल्चर देखें तो वो स्लो है, राइट। रूरल कल्चर इज मोर कनेक्टेड टू रूट्स, अर्बन कल्चर इज मोर कनेक्टेड टू द साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। एंड दोनों कल्चर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, राइट, दे अपोज कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रूट एक है। दोनों एक ही assumptions के ऊपर, एक ही प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हुए हैं, राइट। एंड देखो, अगर इफ वी आर लिविंग इन अर्बन एरिया, राइट, एंड व्हेन वी गो टू द रूरल एरिया, हमारी फीलिंग क्या होती है? डू वी फील गुड?
क्या हमें लगता है कि हमें यहाँ पे और रहना चाहिए? हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, हम लोनली एरियाज में जाते हैं, हम आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, वी फील गुड, हमें लगता है कि हमें और रुकना चाहिए। इट मीन्स वी आर मोर कनेक्टेड टू अवर रूट्स, हमारा जो बेस है हम उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन हम फिर वापस अपने अर्बन में आ जाते हैं, फिर उसी लाइन में, उसी भागा दौड़ी में लग जाते हैं, राइट? सो डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो जैसे कहते हैं विज्ञान है, विज्ञान श्राप भी है, विज्ञान उसमें ग्रोथ भी है। तो अगर हम एक डेवलपमेंट को embrace करेंगे विदाउट acknowledging our traditional system, we will not grow to much extent. So it is a very important to embrace the modern developments while recognizing the traditional system of medicine. हमारी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस इज अ वेरी, you see, it becomes imperative to acknowledge our traditional system of knowledge, traditional system of medicine. So that's all from me. Thank you for your patience hearing. And now, if there is any query, uh, If any participants have any query to ask, you can please proceed ahead. गुड इवनिंग सर। सर आपने बताया कि वो अगर हम एलोपैथ खा रहे हैं, अगर उसके साथ हम आयुर्वेद लेते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी होती है एलोपैथ वाली वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, तो क्या साथ में नहीं लेना चाहिए? साथ में देखिए, अगर हम ले रहे हैं ना तो दो तरह के फिजिशियन हो गए। अगर हम पहले एलोपैथिक मेडिसिन वाले के पास गए, हमने उससे दवाई ली, हमने साथ साथ में आयुर्वेदिक शुरू कर रहे हैं अपनी मर्जी से, है ना? फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि भैया ये साथ में ये भी खा लो, ठीक हो जाएगा, तो उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने फिजिशियन से बात करें कि आपने हमें ये ड्रग दिया है, क्या मैं इसके साथ साथ ये खा सकती हूँ? ठीक है ना? तो ये उसकी नॉलेज में लेके आना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ जाते हैं। कंफ्लिक्ट क्या है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो एलोपैथिक है, वो ये मानते हैं कि ये हर्बल वाला तो कुछ नहीं है, आयुर्वेदा बेकार है। आयुर्वेदा वाले मानते हैं कि ये मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन है, ये बेकार है। तो दोनों एक दूसरे को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे केस में अगर आपका फिजिशियन इस चीज को पॉजिटिवली नहीं ले रहा है ना, तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे लिए यूजफुल है, तो फिर आप किसी ऐसे मित्र की हेल्प लीजिए जो इस चीज को जानता हो और वो आपको इसके थोड़ा सा लिटरेचर स्टडी करके बता सके कि ये ड्रग और ये एलोपैथिक ड्रग और ये नेचुरल ड्रग आपस में इंटरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो नहीं लेना, अगर वो नहीं करेंगे तो आप ले सकते हैं। सर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं। एक मेरे फैमिली मेंबर है, उनकी पीएसए बढ़ गई है, बट डॉक्टर है सजेस्टेड लिवोफ्लॉक्सासिन और एक और मेडिसिन है जो यूरिन के लिए है, बट वो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साथ साथ आप चंद्रप्रभा बटी भी लीजिए, तो क्या वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, अब मुझे स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए हर एक एलोपैथिक ड्रग का हर एक दूसरी हर्बल ड्रग के साथ अलग अलग इंटरेक्शन होती है। तो आप मुझे या तो थोड़ा सा मेरी मेल आईडी मैंने मेंशन किया था, राइट? उस पर आप मुझे अगर मेल कर दें, है ना, कि पर्टिकुलरली कौन सी ड्रग और कौन सा आप ले रहे हैं, तो मैं उसके बारे में पता करके आपको मैं कुछ बता सकूंगा, मतलब खुद उसको सर्च करके। बिकॉज क्योंकि ये जब हर्बल ड्रग इंटरेक्शन होती है ना, ये हर एक चीज को हम याद नहीं रख सकते हैं, राइट? सो दैट इज अ लिमिटेशन। तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करके देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच। ब्रिटानिया को 1% डाउन जा रहा है।
Any other questions from the participants? So I think there are no more questions from participants. So thank you, sir. Thank you so much for your lecture on Indian knowledge system, specifically related to medical science. So we can see that when other civilizations were hunting animals and wearing skin animals to survive, we already had established sources of knowledge that can tell us what to eat, what at what time to eat, and what proportions to eat. So clearly, we had a well-defined structured system for everything in our Vedas and the other books that we have. But with the we are going with the flow as the society is progressing towards more urban or more we can say American type of culture. We are slowly forgetting it, but it's important to stay close to the roots, as you said, and you also busted a lot of the myths that we had that natural chemicals do not have shelf life, and we should not make cocktail out of all the chemicals available, all the herbal that medicines that we have. And we should first, consult with the doctor and then use it. So that was all that I can understand from it, and I hope the participants that got a lot of knowledge out of it that you, apart from your lecture. So thank you, Professor. Thank you, Professor Gulshan Kumar Bansal. And I would also like to thank all the participants for joining today's session. I hope you learned a lot from the lecture itself. So that was it. Thank you so much. Thank you. Have a